When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. Hello guys, welcome back with another video at the Legal Entertainment channel. Guys, today we will discuss about the topic of Indian Penal Code. So here in this video we will discuss the key difference between the public servant and government servant, as well as supporting with the case laws. डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट सर्वेंट की डेफिनेशन सेक्शन 14 में दी गई है इंडियन पेनल कोड में, और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सेक्शन 21 में दी गई। सेकंड डिफरेंस इज अ गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय एनी ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, और पब्लिक सर्वेंट को ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पब्लिक सर्वेंट टू बी सो अपॉइंटेड। थर्ड डिफरेंस अबाउट गवर्नमेंट सर्वेंट इज गवर्नमेंट रिसीव्स सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एज अ फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। जो भी गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उसको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, और पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको सैलरी मिले। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर पब्लिक सर्वेंट टू रिसीव सैलरी। फोर्थ की डिफरेंस अबाउट गवर्नमेंट सर्वेंट इज अ government servant have to perform all the functions for which he is appointed or entrusted to him, and here in public servant is generally is considered servant of public and have to perform all the public works. Public servant को basically जो public के लिए काम करे वो public servant कहलाया जाएगा। Now last difference about government servant is every government servant is public servant. प्रत्येक सरकारी सेवक लोक सेवक होता है। In public servant, every public servant need not to be a government servant. प्रत्येक लोक सेवक का सरकारी सेवक होना आवश्यक नहीं है। So guys, public servant में कौन कौन इंक्लूड होता है, जैसे मिलिट्री ऑफिसर, नेवल ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर्स, ये सब पब्लिक सर्वेंट के अंडर आते हैं। कोर्ट का कोई भी ऑफिसर, जजेस, मजिस्ट्रेट, ये पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड होते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेदर ही इज लिक्विडेटर, receiver or commissioner, whose duty is to investigate or to report on any matter of law or fact, to make, authenticate, keep any document, to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, are usually comes under the public servant. पंचायत का कोई भी मेंबर, जूरी मैन या असेसर पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड होते हैं। आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट होता है। एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एज सच ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस आर कम्स अंडर द पब्लिक सर्वेंट। म्युनिसिपल कमिश्नर इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक सर्वेंट। सो यहाँ कुछ केस लॉज डिस्कस किए गए हैं गाइज, जिसमें हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होता है और पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। GA Monterio versus State of Ajmer, AIR 1957, SC 13. Whether a person is a servant of government or not, it was decided on the following points in the present matter: whether he is in service of government, whether he receives salary from the government, whether he has been entrusted with the work of discharging his public duties. Second case law is SC Pal versus Government, 1978, 2 Calcutta, LJ 245. Public servant means a person who performs public duties. Third case law is PV Narasimha Rao versus State, AIR 1998, SC 2120. A member of parliament is a public servant because he holds the office and is expected to perform public duties. Fourth case law is State of Maharashtra versus Lalji Rajshi Shah, AIR 2000, SC 937. Under Maharashtra Cooperative Societies Act, a cooperative society can be headed by a public servant within the meaning of Section 21 of Indian Penal Code. And last but not least, National Small Industries Corporation Limited versus State, AIR 2009, SC 1284. Government company is a public servant, but every employee of such company is a public servant. So guys, I hope you got my point, the basic difference between the public servant and government servant. Guys, if you have some query regarding this, please ask the question in the comment section and share this video as much as possible. Thank you so much guys. We'll meet in the next video.